Good morning everyone, कैसे हैं आप सब लोग. So now in this video what we are going to do, हमने देखा था यार ट्रेन्स बहुत, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन राइट. हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन राइट. अगर किसी का बेसिक क्लियर है वो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड मास्टर दीज क्वेश्चंस बिकॉज ये पक्का आने हैं, 100% आने हैं. 3-4 तरह के होते हैं एंड दैट टू इज आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैंने क्या किया था, आई मेड ट्रेन्स, I bifurcated trains videos in 2 parts. One is type 1 and another one is your type 2, right? तो type 1 में what I did was, type 1 में का जो केस होता है ना उसमें one thing is moving, means one thing is dynamic and the other thing is stationary. Okay, yes, tell me one thing, what is the difference between this stationary and this stationary? Do mention in the comment box so that I could know how much basics you are done with. तो इसमें क्या था, हमारा एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल आवर ट्रेन वॉज मूविंग and a man was standing, right? Or a pole was standing, or there was some platform. Okay, but type 2 questions क्या होते हैं? In type 2 questions both the things are dynamic in nature, right? They both are moving. या तो 2 ट्रेन मूव कर रही होंगी या एक ट्रेन कोई इंसान मूव कर रहा होगा. So 2 things would be moving in this direction, so there is going to be relative motion, like both things are moving. Okay, and do tell me in the comment section what is the difference between these two. Now before proceeding further we should know certain things which are very important from your exams point of view. जो 2-3 चीज़ें हमें concepts आने चाहिए before proceeding further, right? इन्हें बिल्कुल क्लियर कर लेना अपने माइंड में बिकॉज ये पेपर में आपकी बहुत हेल्प कर जाएंगे. नाउ द कंसेप्ट 1 इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, राइट? तो ये माइंड में क्लियर करना. सपोज 2 ट्रेन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, राइट? इट इज मूविंग विद वेलोसिटी VA एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी VB. तो अगर पेपर में क्वेश्चन में 2 टर्म्स पे ध्यान देना, इफ दे आर सेइंग क्रॉसिंग, when they will say that 2 things have crossed one another, you have to take the relative velocity here. जहाँ भी हमें क्रॉसिंग दिख गया, पासिंग दिख गया, you should know okay now we have to take the relative velocity. अब 2 ट्रेन्स अगर आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, it means they are moving in opposite directions. अगर डायरेक्ट ये लिखा है कि 2 trains are moving in opposite direction and they have crossed each other, so the velocity that we are going to take, the net velocity would be VA plus VB. So we summed up both the velocities, right? So this is the velocity we have to take. Now coming to the next part, if they say that 2 trains or 2 people or train or a person are moving in the same direction and they have once again crossed each other. So in this, once again, never be in a, don't be puzzled, don't get confused, just be very clear. Okay, we have to take the relative velocity once again, but this time if the direction is same, so we will subtract the velocities, right? तो ये चीज़ हमें बिल्कुल कंसेप्ट एकदम माइंड में क्लियर रखना है. फर्स्ट केस क्या था, 2 ट्रेन्स हैं, 2 बॉडीज हैं, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे हैव see this keyword crossed और passed, तो हमें confusion ही नहीं रखना. don't be in a fix at that time. Yes, please tell me the meaning of to be in a fix. What does that mean? Okay, आपका ये idioms and phrases भी साइड बाय साइड कंटिन्यू प्रैक्टिस हो रहा है, तो कमेंट में ये भी बताना, ठीक है? सर्च किसी को आता है तो वो बता देना, अदरवाइज सर्च इट. ओके, गूगल इट. तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या करनी है, हमें फटाफट ऐड कर देनी है इफ अपोजिट डायरेक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट एंड क्रॉसिंग दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड इन द सेकंड वन, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सबट्रैक्ट द वेलोसिटीज एंड बी वेरी श्योर ऑफ दिस वर्ड क्रॉस्ड. ओके, नाउ हाउ टू गो अबाउट दैट, लेट्स सी दैट. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर आई एम गोइंग to talk. 2 trains of same length are, see, 2 trains हैं of same length are running in parallel tracks in opposite directions with speed 65 km per hour and 85 km per hour respectively. They cross each other in 6 seconds. The length of each train is. तो अब हमें जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन करना होता है, what we have to do, see the units, are they same everywhere? Okay, यहाँ हमारा स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, बट इट इज़ इन सेकेंड. तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू चेंज द यूनिट्स ऑफ स्पीड, राइट? तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा. ओके, तो यूनिट्स हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करनी है, वी हैव टू कीप द यूनिट सेम. नाउ सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू ऑब्जर्व इज दैट द की वर्ड there, here what they said, they crossed each other. So now you know we have 2 trains moving in what opposite direction and they have crossed each other. Now what we have to use,
वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो मैंने दो चीजें देखी, पहले यूनिट्स को मेरे को यूनिट्स पे काम करना है, सेकंड नाउ टू ट्रेन्स आर देयर, तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस की वर्ड क्रॉस्ड और पास्ट, राइट। तो नाउ हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन, लेट्स सी इट, ओके। तो अब मैं डाटा को इंटरप्रेट करती हूँ। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ओके। दो ट्रेन्स थी, दोनों की लेंथ थी, सपोज आई विल से दैट दिस इज ट्रेन है, दिस इज बी, और दोनों की लेंथ कुछ है। आई विल अज्यूम दैट दिस इज x मीटर्स, तो ये भी x मीटर्स होगी बिकॉज द लेंथ इज सेम ऑफ फॉर बोथ द ट्रेन्स। नाउ सपोज इसकी स्पीड है कितनी, 65 किलोमीटर्स पर आवर, एंड जो हमारा ट्रेन भी है इसकी स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ दे आर मूविंग इन व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शंस। I already told you कि when you talk about opposite direction, so what we have to do when we have to calculate the relative velocity, we have to sum up the velocities, right? 65, 85. What does it actually comes out to be? 150 kilometers per hour. अब मुझे ये पता था units, time is given in seconds. So what I will try to do, मैं इस 150 kilometer per hour को I'll try to convert it into meter per second. And how to do that? We will multiply it by 5/18. So it becomes this, ठीक है। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इट वुड बी 250/6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई इस केस में। अब हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। Now these two trains they have crossed each other. जब दो ट्रेन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को आपस में, if they are moving in opposite direction and they are crossing each other, तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा? Length of train 1 plus length of train 2. What is the length of train 1? We don't know. We have assumed it x, and length of train 2 is also x. So it is 2x meters, right? Now we know the distance, which is 2x. We know the speed 250/6, and how much time did they take to cross each other? 6 seconds. 6 से 6 cancel, x becomes 125 meters. So this is the length of your train, okay? तो दो चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry my voice is not very clear today. So question number 2 is, two trains start from station A and B and travel towards each other at a speed of 50 km per hour and 60 km per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 120 km more than first. Now interpret the data. First क्या करना है, यूनिट्स देखो सेम है, स्पीड किलोमीटर पर आवर डन, किलोमीटर पर आवर, और क्या चीज दे रखी है, डिस्टेंस, ये भी किलोमीटर में, सो इट्स कंप्लीटली फाइन, यूनिट्स आर सेम। नाउ सेकंड थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज दैट दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, राइट, दे आर मूविंग लाइक दिस। सो दो स्टेशन है, दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी, राइट। तो ये दोनों ट्रेन्स और यहाँ दो ट्रेन्स है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स वन अनदर। नाउ द थिंग इज, अब कुछ लोग क्या करेंगे, दे विल यूज द रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है, ओके। बट आपको यहाँ कहीं भी क्रॉसिंग वर्ड दिख रहा है, कैन यू सी द वर्ड क्रॉस हेयर इन द क्वेश्चन एनीवेयर? तो यहाँ क्रॉस वर्ड यूज नहीं हो रहा, सो डोंट थिंक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, अब उसको जस्ट गिव इट सम रेस्ट, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी travel towards each other at a speed of 50 km per hour and 60 km per hour respectively. So this train, it is traveling with 50 km per hour and this train is traveling at 60 km per hour and they are moving towards one another. Now at a certain point they have met, okay. मान लो यहाँ ये मिल गए, at this point they have met, not crossed each other. इन्होंने कहा जितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रैवल किया, ट्रेन बी ने उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इतना डिस्टेंस, 120 किलोमीटर्स मोर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन ए. सो इट इज वेरी एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है लीविंग नो रूम ऑफ डाउट. इट मीन्स वेरी एक्सप्लिसिट. दे हैव मेंशन्ड इट, राइट. एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग्स द सेकंड ट्रेन, दिस ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर्स मोर देन ट्रेन 1, राइट. तो अब हमारे पास दो डाटा हो गए, ठीक है. मैं ट्रेन ए की बात कर लेती हूँ जो स्टेशन ए से शुरू हुई है, ठीक है. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मैंने अज्यूम किया इट हैज ट्रैवल डिस्टेंस x, राइट. स्पीड इज गिवन 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम आई डोंट नो. तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, x/50. मतलब
और दूसरे केस में हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हाँ, यहाँ डिस्टेंस कितना है 120 अप प्लस x, तो और स्पीड मेरी है 60 इनटू टाइम, तो इट वुड बी 120 प्लस x अपॉन 60. सो दिस इज माई टाइम. ओके, तो हमें दो चीजें मिल गई, राइट. वी गॉट 2 टाइम्स. नाउ जस्ट टेल मी, सपोज these two trains they have started together. तो अगर ये 10 बजे चली थी तो ये भी 10 बजे चली थी अपने स्टेशन से, तो सपोज ये मिलते 11 बजे ये मिल जाते हैं, तो इसने भी 1 घंटा ट्रैवल किया, इसने भी 1 घंटा ट्रैवल किया, तो जितना टाइम टी ये होगा उतना ही टाइम टी ये होगा. सो इफ these times are equal, so cannot we equate these two things? X upon 50 is equals to 120 plus x upon 60. It's very clear, right? So we will cross multiply here, right? So what would be 60 5x, so x would be 600. So this is what 600 kilometers, because हमने यूनिट सारी किलोमीटर्स में रखी हैं. So x is 60. What they actually asked for, they said कि tell us the distance between the two stations. What is the distance between the two stations? This, so it is x plus 120 plus x, which is 120 plus 2x. So this is the net distance, and what is the value of x? It is 600. So मैं यहाँ substitute करूँगी. I don't have space here, so I am writing here 120 plus 2 into 600. तो ये कितना हो जाएगा 1200 and 120, it would be 1320 kilometers. So this is the distance between the two stations. Now coming to the next question. Two trains of length 70 meter and 90 meter are moving in opposite directions at 60 meters per second, 10 meter per second and 6 meter per second respectively. Find the time taken by trains to, now the keyword here, cross is here, okay, highlight that. Now one statement. Now are the units same? Meter, meter, meter second, amazing. No need to change the units here as well. Now the trains are moving in opposite directions and they have crossed each other, they will cross each other. तो अब हमें बहुत क्लियर होना चाहिए. Okay, tell me one difference. What is the difference between clear and crystal clear? I think most of you will think that these two words are the same. Tell me what is the difference. Which is the positive word, which is the negative word whatsoever? What is the difference? Do comment in the comment section. Okay, so now हमारा क्या है, इन्होंने हमें क्रॉस वर्ड दिख रहा है. ओके, तो हमें पता लगे जैसे द मोमेंट वी विल सी क्रॉस वी नो ओके नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी. राइट, नाउ दीज ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. तो ऑलरेडी केस बताया था, इफ टू ट्रेन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सम अप द वेलोसिटीज. सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी हियर? 10 plus 6, it is your 16 meters per second. Any doubt here? I think now it should be very clear. So this is the relative velocity. Now the formula, distance is equals to speed into time. If two trains are crossing each other, so what is the total distance traveled? It is the length of train 1. What is it? It is 70 plus length of train 2. So it is 160 meters. What is the speed? We don't know. We have to calculate. Okay, sorry. We know the speed. Sorry, 16. We have to calculate the time. So 160 upon 16. So with what it would be 10 seconds. So these two trains will take 10 seconds in order to cross each other, right? So I think now things would be becoming clear to you. I'll try my best. Okay, let's see. A train running at the speed of 84 km per hour passes a man walking in opposite direction at the speed of 6 km per hour in 4 seconds. Now once again the key word, passes, crosses, whatsoever. The moment you encounter this word na, okay, tell me what is the meaning of encounter. Give me 2 separate meanings of encounter in the comment section. So this is also our quiz going on, so it is everything. Okay, so now we are doing integrated studies. Okay, tell me the opposite of integration. What is the opposite of integration? Integration क्या होता है? 3-4 aspects को, हर चीज को combine करके we are moving. Okay, so what is the opposite of integration? You have also studied that in your math section. Okay, a train running at the speed of 84 km per hour passes a man walking in opposite direction at a speed of 6 km per hour in 4 seconds. अब मुझे दिख गया क्रॉस लिखा हुआ है, मुझे दिख गया opposite directions है. What do I have to do? I have to calculate the relative velocity, and if two trains are moving in the opposite direction, what we have to do? Sum up them. तो क्या क्या speed given था? 84 plus 6, what is it? 90 kilometers per hour.
hour. तो ये हमारी relative velocity हो गई, and the time is given in 4 seconds. तो what we have to do, just convert that, right? तो अब हमें इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा. And how to do that? 90 into 5 by 18. So it would be of 525 meters per second. So this is your velocity, this is your time. Can you calculate the distance here? Distance would be the length of the train. Because अगर एक ट्रेन और एक इंसान मूव कर रहे होते हैं, जब दो ट्रेन्स आपस में क्रॉस करती हैं, राइट, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना लेते हैं? L1 plus L2. बट इफ देयर इज अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 एंड इफ देयर इज अ पर्सन, तो पर्सन की लेंथ हम नेग्लिजिबल रखते हैं, राइट, तो वी डोंट सम इट अप. तो बस हम जो ट्रेन की लेंथ है वो कंसिडर करते हैं. सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड व्हाट इज द स्पीड? रिलेटिव स्पीड 25, velocity sorry, into the time taken 4, so it is 100 meters. So this is the length of the train. Okay, so what we have to do is we have to be a bit curious, right? छोटी छोटी चीजें, keywords देखो और अपना खुद का शॉर्टकट बनाओ कि okay, if this keyword comes, how to go about the question. कितने तरह के questions आ जाएंगे. See, whatever questions I'm teaching you, I'll provide all these questions in the Telegram group, so you can go there, you can practice them. I will give you the options as well. तो एक बार वीडियो देख के खुद questions करो और options देखो and see whether you can mark the correct answer or not. So you have to be a little bit curious. Okay, I'll provide the Telegram link in the description box. Okay, so if you want to join, do join. So yes, one more thing which I would like to ask from you is that since we have talked so much about speed, okay, so we have talked so much about speed, tell me the units of speed. Okay, in the comment section tell me that speed का unit क्या होता है, acceleration का unit क्या होता है, tell me that. Okay, and you must have heard of one thing. तो आपको ना 2-3 चीजें मुझे comment section में बतानी है. ये आपका होमवर्क है, whatsoever you consider. speed की unit बता देना, acceleration की बताना, एंड आपने कभी ये टर्म सुना होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सर्च इट कि इसकी SI यूनिट क्या होती है and write it down in the comment section. Okay, so be a little bit curious. Believe me, it will help you a lot in this particular exam. The more curious you are, the more multidimensional thinking you will keep, तो हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. ओके, क्यूरियस से मुझे एक चीज याद आई. Just also tell me the meaning of the word inquisitive. Okay, what is the meaning of this word inquisitive? I don't know, just Google it and tell me in the comment section. Okay, so those of you who want to join the Telegram group, just join it. I'll put some questions there and yes, do practice a lot. Suppose अगर अब आज हमारा trains का section complete हुआ है, now it is your responsibility to go and practice that. Otherwise, without practice, it won't be of any help to you. Okay, so thank you so much for your time and do practice a lot.